Hello student, today we are going to learn question number 6. What is allotment of shares and explain the conditions or provisions related to allotment of shares. Allotment means distribution of shares or allocation of shares among the applicant. See, meaning of allotment of share. When a company gives shares to an applicant. Applicant means those who apply for the shares. Based on the application submitted, it is called as allotment of shares. So, when any company wanted to issue shares to general public, then that company gives prospectus in newspaper or prospectus is given through different electronic media. That may be email, or that may be internet, or that may be social media. After giving prospectus, people, those who want to invest their money into that company by purchasing the shares, all that people need to give application, need to make application to company to purchase the shares of that company. म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनीला शेअर्स इश्यू करायचे असतात, शेअर्स विकायचे असतात, तेव्हा ती कंपनी शेअर्स विकण्यासाठी आधी प्रॉस्पेक्टस देते. ते प्रॉस्पेक्टस न्यूजपेपरमध्ये दिलं जाऊ शकतं किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा वापर करून ते प्रॉस्पेक्टस दिलं जातं. प्रॉस्पेक्टस दिल्यानंतर ज्या लोकांना शेअर परचेस करायचे आहेत ते लोक कंपनीला application करतात. And after making that application and after receiving that application by company allots shares, company gives them shares according to the proportion decided by the company or according to the proportion decided in the meeting. मतलब अभी देखो, कंपनी को शेयर्स इश्यू करने हैं, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस दे दिया, मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दिया. उसके बाद जिन लोगों को शेयर्स परचेस करने हैं वो लोग कंपनी को एप्लीकेशन करेंगे. एप्लीकेशन कंपनी को मिलने के बाद कंपनी उनको एक्चुअल में शेयर्स इशू करेगी. इस प्रोसेस को कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स नथिंग बट इश्यू ऑफ शेयर्स टू अप्लिकांट. ज्या ज्या लोकांनी एप्लीकेशन केलेले आहेत त्या लोकांना जेव्हा कंपनी प्रत्यक्षात शेअर इश्यू करते, शेअर्स देते, त्याला म्हटलं जातं अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स. सो अलॉटमेंट ऑफ शेअर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेअर्स टू अप्लिकांट, गिविंग शेयर्स टू अप्लिकांट. जो जितने भी अप्लिकांट है जिन्होंने शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन किया है, उन लोगों को जब कंपनी शेयर्स देती है तब उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Supreme Court has defined allotment as the appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of certain number of shares to a person. So appropriation means distribution and unappropriated means undistributed or unissued. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलॉटमेंट मतलब क्या? अलॉटमेंट मतलब distribution of shares, distribution of shares out of previously unappropriated capital. मतलब कंपनी के पास जो शेयर्स अभी तक कंपनी ने इश्यू नहीं किए, हम लोगों ने शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन देखा है. उसमें एक रहता है इश्यूड कैपिटल, दूसरा रहता है अनइश्यूड. अनइश्यूड मतलब कंपनी वो फ्यूचर में इश्यू कर सकती है. तो जब अनइश्यूड शेयर्स में से कंपनी कुछ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स लोगों को इशूड करती है, तब उसे बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. म्हणजे कंपनीचे जे काही अनइशूड शेयर्स असतात, म्हणजे कंपनीने अजून ते इश्यू केलेले नाहीत, असे शेयर्स
जेव्हा अप्लिकंटला दिले जातात तेव्हा त्याला म्हटलं जातं अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स. सो अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ शेअर्स अँड अनअप्रोप्रिएटेड मीन्स undistributed or unissued shares. Thus, as per this definition, allotment of share means allotting, that is giving certain number of shares by board of director out of the previously unallocated, that is undistributed capital of the company to person who have applied for the shares. So, allotment is nothing but allocation or giving the certain number of shares by the board of director to the applicant from previously undistributed or unissued shares. मतलब कंपनी के जो पहले से ही अपने पास कुछ शेयर्स रहते हैं कंपनी के जो अनइश्यूड रहते हैं, हम लोगों ने वो शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन में देखा है. शेयर कैपिटल का ऑथोराइज कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इशूड कैपिटल एंड सेकंड होता है अनइश्यूड. तो जो अनइश्यूड है उसमें से जब कंपनी अप्लीकांट को, अप्लीकांट मतलब ऐसे लोग जिन्होंने शेयर्स लेने के लिए एप्लीकेशन किया है, उन लोगों को कंपनी जब शेयर्स देती है तब उसे कहा जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. लक्षात, म्हणजे ज्या लोकांनी आपल्या कंपनीकडे शेअर परचेस करण्यासाठी अप्लिकेशन केलंय त्या लोकांना कंपनी जेव्हा शेअर्स इश्यू करते, शेअर्स देते, त्याला म्हटलं जातं अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स. The company issues prospectus and application form. Applicant, that is subscriber, fills the form and submit it with application money to the company's bankers. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कंपनी को अगर शेयर इश्यू करने हैं तो वो कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस देगी. प्रोस्पेक्टस मतलब उसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी को कितने शेयर इश्यू करने हैं, हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रहेगा, शेयर का प्राइस क्या रहेगा, कौन से तारीख को इश्यू स्टार्ट होगा, कौन से तारीख तक इश्यू चलेगा, वो सब डिटेल जिस चीज में दी जाती है उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टस. तो न्यूज़पेपर में दिया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके उसका एडवर्टाइज किया जाएगा. उसके बाद उसके साथ ही दिया जाएगा एप्लीकेशन. तो जिन लोगों को लगता है कि हमें शेयर्स लेने हैं वो लोग कंपनी को एप्लीकेशन करेंगे अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, एंड दैट मनी टू बी सबमिटेड और दैट मनी टू बी गिवन टू द कंपनीज बैंकर्स. और एप्लीकेशन मनी कंपनी बैंकर्स को देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंपनी ने रखा है एप्लीकेशन मनी ₹1 फॉर 1 शेयर, मतलब एक शेयर के लिए ₹1 एप्लीकेशन मनी, तो अगर आप 10 शेयर परचेज करते हैं तो आपको ₹10 एप्लीकेशन मनी बैंक में जमा करना पड़ेगा. कंपनी का जो भी बैंक दिया जाएगा उसमें जमा करना पड़ेगा. ओके, म्हणजे तुम्हाला एप्लीकेशन करावं लागतं आणि त्या एप्लीकेशन बरोबर तुम्हाला एप्लीकेशन मनी देखील द्यावे लागतात आणि ती एप्लीकेशन मनी कंपनी प्रॉस्पेक्टस मध्ये सांगते की किती असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ₹1 फॉर 1 शेअर म्हणजे एका शेअर साठी ₹1. मग समजा तुम्ही 10 शेअर्स घेतले तर तुम्हाला ₹10 त्या कंपनीच्या बँकर जो कोणी असेल, बँक असेल, त्या बँकेमध्ये तुम्हाला जमा करावे लागतील. The board of directors approves the acceptance of such application in the board meeting by passing resolution. This is called as allotment of shares. So after getting application from applicant or after getting application from people, after getting application from investor, company scrutinize all that applications and decide the ratio of allotment of shares, and accordingly company allots shares by having having board meeting and by passing resolution. म्हणजे एकदा एप्लीकेशन आल्यानंतर सर्व एप्लीकेशन स्क्रुटिनाइज केले जातात, चेक केले जातात. चेक केल्यानंतर कंपनी एक रेशो ठरवते की आपल्याला किती शेअर द्यायचे आहेत. म्हणजे द्यायचे आहेत ते ठरवलेलं असतं, पण एप्लीकेशन कमी पण येऊ शकतात, जास्त पण येऊ शकतात. मग समजा एप्लीकेशन जास्त आले, मग प्रत्येक एप्लिकंटला आपण किती शेअर द्यायचे त्याचं कंपनी काय करते, रेशो
डिसाइड करते त्याला म्हटलं जातं अलॉटमेंट प्रपोर्शन और अलॉटमेंट रेशो. मग त्या रेशोनुसार प्रत्येक अप्लिकंटला किती शेअर द्यायचे ते डिसाइड केलं जातं. अँड दॅट इज डिसाइडेड इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रिजोल्यूशन. तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है और उसमें हर एक शेयर होल्डर को या हर एक अप्लीकांट को कितने शेयर्स इशू करने हैं वो डिसाइड होता है और उसका जो रिजोल्यूशन है वो भी पास किया जाता है. रिजोल्यूशन पास करने के बाद एक्चुअल में जो अप्लीकांट है उसको शेयर्स क्या होते हैं, इशू होते हैं. The board of director has the power to allot the shares. So board of director can allot the shares among the applicant. मतलब जो शेयर्स के एप्लीकेशन आते हैं उनको शेयर्स अलॉट करने का, शेयर्स देने का अधिकार किसके पास रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओके, म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कडे शेयर्स अलॉट करण्याचा अधिकार असतो. Under the Companies Act 2013, following companies have to issue shares, that is securities, in dematerialized form, that is electronic form. Generally, currently, most of the companies issue shares in dematerialized form, not in paper form. म्हणजे 2013 जो कंपनी ऍक्ट 2013 आहे त्यानुसार खालील आता ज्या कंपन्या आपण बघणार आहोत त्या कंपन्यांना जे शेअर्स इश्यू करायचे असतात ते शेअर्स डिमटेरियलाइज फॉर्म मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये इश्यू करावे लागतात. पेपर फॉर्म मध्ये इश्यू करता येत नाहीत. फर्स्ट, a company making a public offer in excess of ₹10 crores. It means if company collecting or company raising share capital more than ₹10 crores. It means if company issuing shares of more than ₹10 crores, that company need to issue shares in dematerialized form. मतलब अगर कोई कंपनी जो शेयर्स बेचने वाली है उन सब शेयर्स का वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो उस कंपनी को जो भी शेयर्स कंपनी जो भी शेयर्स देगी वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, कंप्यूटराइज फॉर्म में होने चाहिए. सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th September 2018. अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है मतलब जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, ऐसी अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसका कोई न्यू इशू है, ऐसे सभी कंपनी को 10th September 2018 के बाद जो भी शेयर्स वो कंपनी इशू करेगी वो कौन से फॉर्म में रहेंगे, डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे. म्हणजे जी कंपनी अनलिस्टेड असेल, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड म्हणजे त्या कंपनीचे शेअर्स भारतामधील स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग झालेली नसते त्याला म्हटलं जातं अनलिस्टेड. अशी कंपनी जेव्हा नवीन शेअर्स इश्यू करणार असेल तेव्हा त्या कंपनीला जे नवीन शेअर्स कंपनी इश्यू करणार असेल ते शेअर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म मध्ये इश्यू करावे लागतात, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये इश्यू करावे लागतात. कधीपासून, 10th September 2018 पासून. Such other class or classes of companies as may be prescribed and other companies which are prescribed in Companies Act 2013. कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये आणखी अशा प्रकारच्या काही जर कंपन्या सांगितल्या असतील तर त्यांना देखील हा रूल अप्लाई होतो. तो इस रूल के थ्रू इन सभी कंपनी को जिसका जो कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बेचने वाली है, 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा, और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उन कंपनी को अपने जो भी शेयर्स इशू करने हैं वो कौन से फॉर्म में इशू करने पड़ते हैं, डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू करने पड़ते हैं. Any other company can issue its shares in any form. So other company than given in Companies Act 2013 may issue their shares in any form. Any form means either in electronic form or either in paper form.
म्हणजे आपण कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये ज्या कंपनी बघितले, म्हणजे जी कंपनी 10 करोड पेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स विकणार आहे, जी कंपनी अनलिस्टेड आहे अशी पब्लिक कंपनी, आणि ज्या कंपनीला प्रिस्क्राईब केलेला आहे कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये, अशा 3 प्रकारच्या ज्या कंपनीज आहेत त्यांना आपले शेअर्स डिमॅटेरियलाइज फॉर्म मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्येच द्यावे लागतात. पण हे सोडून या 3 प्रकारच्या इन 3 तरह की जो कंपनी है वो छोड़ के अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी अपने शेयर्स किसी भी फॉर्म में इश्यू कर सकते हैं. म्हणजे हे 3 प्रकारच्या कंपन्या सोडून बाकीच्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्या कोणत्याही फॉर्म मध्ये आपले शेअर इश्यू करू शकतात. कोणताही फॉर्म म्हणजे आयदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और आयदर इन पेपर फॉर्म. Also, the company have the freedom to convert its shares into dematerialized form at any point of time. So, if company decides to issue shares in paper form, then that company can convert its shares in dematerialized form in electronic form at any time. मतलब अगर हमारी कोई कंपनी है, बराबर, वो उस 3 प्रकार की जो कंपनी है उसमें नहीं आती, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शेयर इशू करेंगे पेपर फॉर्म में, और हम लोगों ने पेपर फॉर्म में शेयर इशू किए. शेयर इशू करने के बाद हमें जब भी लगेगा तब हम हमारे कंपनी के जो शेयर्स है जो पेपर फॉर्म में है वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसको डीमॅटेरियलाइज कर सकते हैं. म्हणजे जर तुम्ही पेपर फॉर्म मध्ये शेअर्स इश्यू केले आणि फ्युचर मध्ये तुम्हाला कधीही वाटलं की तुमचे जे शेअर्स पेपर फॉर्म मध्ये आहेत ते आता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत, तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा तुमची कंपनी पेपर फॉर्म मधले शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकते. कन्वर्टिंग शेअर्स फ्रॉम पेपर फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म is called as a dematerialization. Companies issuing shares in dematerialized form has to comply with the provision of the Depositories Act 1996 and regulation issued thereunder. So, if your company have decided to issue shares in dematerialized form, then your company need to comply with the rules and regulation given in Depositories Act 1996. अगर आपके कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब डीमैटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स इशू करेंगे, तो आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के जो भी प्रोविजन है, जो भी रूल्स एंड रेग्युलेशन है वो फुलफिल करने पडेंगे, उसको फॉलो करना पडेगा. आलं लक्षात? म्हणजे जर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये तुम्हाला शेअर्स इश्यू करायचे असतील तर तुम्हाला डिपॉझिटरी ऍक्ट 1996 यामध्ये जे काही रूल्स दिलेले आहेत, जे काही रेग्युलेशन दिलेले आहेत, ज्या काही प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत त्या तुम्हाला फुलफिल कराव्या लागतात. आणि त्या फुलफिल केल्यानंतर तुम्ही तुमचे जे शेअर्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये म्हणजे डीमॅटेरियलाइज फॉर्म मध्ये इश्यू करू शकता. Next is provisions or condition for allotment of shares. See, provision means rules. Every company issuing shares has to comply with the provision of the Company Act 2013 with regard to allotment of shares. So every company, each and every company has to fulfill the provision given in Company Act 2013. That provision related to allotment of shares. म्हणजे ज्या कोणत्या कंपनीला शेअर्स इश्यू करायचे असतील ते इश्यू करत असताना अलॉटमेंट ऑफ शेअरच्या बाबतीत जे काही प्रोव्हिजन कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये दिलेले आहेत त्या सर्व प्रोव्हिजन कंपनीला फॉलो करावे लागतात, त्या कंपनीला फुलफिल कराव्या लागतात. A public company has to also follow the company's prospectus and allotment of securities rules 2014 and SEBI issue of capital and disclosure requirement regulations 2018. And if your company is public limited company, then you also need to follow company's
prospectus and allotment of security rules 2014 and also need to follow SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018. म्हणजे जर तुमची पब्लिक लिमिटेड कंपनी असेल तर तुम्हाला कंपनी ऍक्ट 2013 तर फॉलो करावाच लागेल. म्हणजे 2013 जो ऍक्ट आहे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीला पण फॉलो करावा लागतो आणि प्रायव्हेटला पण. पण जर तुमची पब्लिक लिमिटेड असेल तर आणखी तुम्हाला दोन रूल फॉलो करावे लागतील. कोणते? कंपनी prospectus and allotment of security rules 2014 and SEBI issue of capital and disclosure requirements regulation 2018. तो ये दो जो रूल्स है रेगुलेशन से वो भी आपके कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो. For allotment of shares, a company has to fulfill following provisions. So provisions are divided in two parts, that is statutory provisions and general principles. मतलब allotment of shares के लिए कंपनी को कौन कौन से provisions फॉलो करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं, वो हमें देखना है. और वो जो प्रोविजन है दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं. एक है स्टॅच्युटरी प्रोविजन अँड सेकंड इज जनरल प्रिन्सिपल. म्हणजे कंपनीसाठी जे काही रूल्स आहेत, जे काही रेग्युलेशन्स आहेत ते दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेले आहेत. एक म्हणजे स्टॅच्युटरी प्रोविजन अँड सेकंड इज जनरल प्रिन्सिपल्स. नाउ सी दी स्टॅच्युटरी प्रोविजन्स related to allotment of shares. These are provisions laid down in the Company Act 2013. So provisions which are given in Company Act 2013 related to allotment of shares called as statutory provisions. म्हणजे ह्या प्रोव्हिजन्स ह्या कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये दिलेल्या आहेत म्हणून त्याला म्हटलं जातं स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजन्स. First, registration of prospectus. A copy of the prospectus must be filed with the registrar of company for registration on or before the date of its publication. So first, when company prepares its prospectus for issue of shares, then copy of that prospectus must be filed with the registrar of companies for registration on or before the date of its publication. Means before the publication of that prospectus in any media, company need to file copy of that prospectus for registration with the registrar of companies. म्हणजे प्रत्येक कंपनी जेव्हा प्रॉस्पेक्टस तयार करते ते प्रॉस्पेक्टस तयार केल्यानंतर त्याची एक कॉपी रजिस्ट्रेशन साठी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हा जो ऑथॉरिटी असतो पर्सन त्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे फाईल करावी लागते म्हणजे सबमिट करावी लागते. मग कधी सबमिट करायची? ते प्रॉस्पेक्टस आपलं पब्लिश होण्याच्या आधी म्हणजे न्यूजपेपर मध्ये आपल्याला पब्लिश करायचं आहे त्याच्या आधी किंवा त्या दिवशी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे ते सबमिट करून रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. ओके, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप आपका प्रॉस्पेक्टस डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर सकते. पब्लिश करने से पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. This prospectus must be signed by every proposed director in case of newly formed company or directors or his duly authorized advocate. और वो जो भी prospectus रहेगा उस prospectus के ऊपर जो भी प्रपोज डायरेक्टर है इन केस ऑफ न्यूली फॉर्म कंपनी. प्रपोज डायरेक्टर मतलब समझो हमारा नया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ तो हमारे अभी तक डायरेक्टर फिक्स नहीं हुए लेकिन ऐसा कुछ डिसाइड होता है कि हाँ ये डायरेक्टर होगा, ये होगा डायरेक्टर और ये पर्सन डायरेक्टर होगा, लेकिन अभी तक वो फिक्स नहीं हुए हैं. शेयर होल्डर के थ्रू जब मीटिंग में वो फिक्स अभी तक हुए नहीं उसे बोला जाएगा प्रपोज डायरेक्टर. तो उन डायरेक्टर का सिग्नेचर उस प्रॉस्पेक्टस के ऊपर रहेगा. अगर हमारी पुरानी कंपनी है तो जो भी डायरेक्टर रहेंगे जो हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं, इलेक्टेड है, उनका सिग्नेचर वहां पे रहेगा. और अगर डायरेक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो उसने
जिसको भी ऑथोराइज एडवोकेट को अगर उसने अपॉइंट किया है तो वो पर्सन भी वहां पे सिग्नेचर कर सकता है. हा लक्षात. म्हणजे जे काही प्रॉस्पेक्टस असेल त्या प्रॉस्पेक्टसवर प्रपोज डायरेक्टरची सिग्नेचर असली पाहिजे. प्रपोज म्हणजे आपली समजा नवीन कंपनी असेल आणि अजून आपले डायरेक्टर फिक्स झाले नसतील, इलेक्टेड झाले नसतील, कारण की डायरेक्टरचं इलेक्शन कोण करतं? शेअर होल्डर्स करतात. शेअर होल्डर इलेक्ट्स डायरेक्टर आणि अजून ते झालं नसेल, मग जे कोणी संभाव्य डायरेक्टर असतील, म्हणजे जे होऊ शकणार आहेत असे जे लोक असतील त्यांना आपण म्हणणार प्रपोज डायरेक्टर. त्यांची सिग्नेचर त्या प्रपोजल प्रॉस्पेक्टसवर असेल. त्याचबरोबर समजा आपली जुनी कंपनी असेल, म्हणजे आपले डायरेक्टर असणार, त्यांची सिग्नेचर असेल. किंवा जो ऑथोराइज डायरेक्टर अवेलेबल नसेल तर त्यांनी ज्या पर्सनला ऑथोराइज केलेला आहे असा त्याचा वकील, तो देखील प्रॉस्पेक्टसवर सिग्नेचर करू शकतो. ओके, सो इन शॉर्ट, your prospectus must be registered with registrar of companies. Second is application money. The Company Act states that along with the application form, the applicant has to pay a minimum 5% of the nominal amount of the shares or such other amount as specified by the SEBI. So, minimum application money should be 5% of nominal value of the shares. So, applicant need to submit minimum 5% as application money along with application for shares. म्हणजे कंपनी जेव्हा प्रॉस्पेक्टस देणार, प्रॉस्पेक्टस नंतर ज्या लोकांना वाटतं की आपल्याला शेअर्स घ्यायचे आहेत त्या लोकांना कंपनीकडे अप्लिकेशन करावं लागतं. परंतु ते अप्लिकेशन करताना त्यांना पैसे देखील भरावे लागतात. त्याला म्हटलं जातं अप्लिकेशन मनी. आणि ते अप्लिकेशन मनी minimum 5% पाहिजेत of the nominal value of the share, means face value of the shares. For example, if face value of share is ₹10, मतलब अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो 10 रुपए का 5% कितना हो जाएगा? 50 पैसा. तो कम से कम 50 पैसा एप्लीकेशन मनी वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा एक शेयर्स के पीछे. ओके, तो अगर आपके 10 शेयर है तो 5 रुपए आपको वहां पे एज अ एप्लीकेशन मनी कम से कम सबमिट करना पड़ेगा. और कंपनी क्या कर सकती है, वहां पे एप्लीकेशन मनी प्रॉस्पेक्टस में दिया जाता है, लेकिन वो जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में दिया है वो कम से कम 5% होना चाहिए ऑफ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से 5% कम नहीं होना चाहिए. कंपनी 1 रुपया भी रख सकती है या कंपनी 10% भी रख सकती है, कंपनी 15% भी रख सकती है. SEBI has specified for public company the application money to be minimum 25% of the nominal amount of shares. See, if your company is private company, then application money should be minimum 5%. But SEBI has specified as far as public companies are concerned. अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो सेबी कहता है कि आपका एप्लीकेशन मनी कम से कम 25% होना चाहिए. किसका 25%? नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स. मतलब अगर शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज तो 10 रुपीज का 25% मतलब 2 रुपीज एंड 50 पैसा. म्हणजे जर 10 रुपये जर फेस व्हॅल्यू असेल, नॉमिनल व्हॅल्यू असेल, त्याच्या 25% हे मिनिमम अप्लिकेशन मनी असलं पाहिजे. कोणत्या केसमध्ये? पब्लिक कंपनीज मध्ये. असं कोण सांगतं? सेबी सांगतं. ओके, ऍज पर सेबीज गाईडलाईन. म्हणजे 10 रुपीजचा 25% म्हणजे 2.50 रुपीज, म्हणजे 2 रुपये 50 पैसे एवढे काय असलं पाहिजे? अप्लिकेशन मनी असलं पाहिजे. The application money is to be paid in the bank specified by the bank, and applicant need to pay that money into the bank specified by the company. म्हणजे जे काही application money सांगितलं असेल ते मनी, ते पैसा
कंपनीचा जो कोणी बँकर असेल जे प्रॉस्पेक्टस मध्ये दिलेलं असतं त्या बँकेमध्ये अप्लिकांटला काय करावे लागतात, जमा करावे लागतात. अप्लिकेशन मनी दिल्याशिवाय तुमचं अप्लिकेशन कंपनीमध्ये सबमिट होणार नाही. ओके, तो जितना भी शेयर्स अगर कोई इन्वेस्टर लेना चाहता है, पर्सन लेना चाहता है, उस पर्सन को अप्लीकेशन करना पड़ता है और उस अप्लीकेशन के साथ अप्लीकेशन मनी भी देना पड़ेगा. कंपनी एक्ट के हिसाब से वो कम से कम 5% होना चाहिए, लेकिन सेबी के हिसाब से अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो कम से कम वो 25% होना चाहिए. किसका 25%? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. और वो पैसा आपको कंपनी ने जो भी बैंक प्रॉस्पेक्टस में लिखा है उस बैंक में जमा करना पड़ेगा. थर्ड इज minimum subscription. Minimum subscription is the minimum amount of share that must be taken or bought by the subscriber. Okay, minimum subscription का मतलब क्या है कि कम से कम उतना रिस्पॉन्स आपके शेयर्स के लिए लोगों से मिलना चाहिए. कम से कम उतने शेयर्स लोग लेने के लिए तयार होणे चाहिए. म्हणजे कमीत कमी मिनिमम सबस्क्रिप्शन मध्ये जेवढे सांगितले असतील तेवढे शेअर्स लोकांनी घ्यायला तयार असले पाहिजेत. त्याला म्हटलं जाईल मिनिमम सबस्क्रिप्शन, दॅट इज रिस्पॉन्स. This amount is mentioned in the prospectus and company need to mention the amount of minimum subscription in the prospectus. आणि कंपनी आपण किती शेअर्स इश्यू करणार आहेत आणि मिनिमम सबस्क्रिप्शन किती आलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, कंपनी डिसाइड टू इश्यू 10,000 शेअर्स. कंपनीने डिसाइड केलं की आपण 10,000 शेअर इश्यू करायचे. मग मिनिमम सबस्क्रिप्शन किती? फॉर एक्झाम्पल 9,000. मग कंपनी प्रॉस्पेक्टस मध्ये लिहित आहे मिनिमम सबस्क्रिप्शन इज 9,000. म्हणजे कमीत कमी 9,000 शेअर्स विकत घेण्यासाठी कंपनीकडे अप्लिकेशन आले पाहिजे. तो कम से कम 9,000 शेयर्स परचेस करने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आने चाहिए. उसे बोला जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन और वो आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा. It must be collected within 30 days from issue of prospectus and minimum subscription means that much response must be collected within 30 days from the issue of prospectus. म्हणजे जेव्हा आपण प्रॉस्पेक्टस इश्यू करणार, प्रॉस्पेक्टस इश्यू केल्यानंतर कमीत कमी 30 दिवसामध्ये आपल्याला मिनिमम सबस्क्रिप्शन जेवढं सांगितलेलं आहे तेवढा रिस्पॉन्स आपल्याला मिळायला पाहिजे. म्हणजे तेवढे शेअर्स घेण्यासाठी लोक तयार असले पाहिजेत विदिन 30 डेज. सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इश्यू. और सेबी ने कहा है कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 10% होना चाहिए ऑफ द टोटल इशू. मतलब अगर मैं 10,000 शेयर्स इशू करने वाला हूं तो 10,000 का 90% बन जाएगा 9,000. इसका मतलब कम से कम मुझे जो एप्लीकेशन आएंगे शेयर परचेस करने के लिए, वो शेयर्स परचेस करने के लिए जो एप्लीकेशन आएंगे कम से कम 9,000 शेयर्स के लिए होने चाहिए. मतलब मेरे 9,000 शेयर्स बेचने के लिए रेडी होने चाहिए या खरीदने के लिए लोग रेडी होने चाहिए. उसे बोला जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मतलब उतना रिस्पांस आपके शेयर्स को मिलना ही चाहिए. तो सेबी के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% ऑफ द इशू. A. Usually, when a company does not collect minimum subscription, it means its issue has been undersubscribed. That is, the number of shares applied for is less than the shares offered by the company. And if company received less response, it means, for example, minimum subscription is given 9,000. Company want to issue 10,000 shares and minimum subscription is given 9,000. But company received application only for 7,000 shares. म्हणजे 9,000 शेअर्स कमीत कमी आले पाहिजेत तेवढा रिस्पॉन्स. पण कंपनीला जो रिस्पॉन्स आला तो फक्त 7,000 शेअर साठीच आला. त्याला म्हटलं जाईल अंडर सबस्क्रिप्शन. काय म्हटलं जाईल? अंडर सबस्क्रिप्शन. And if company get more response,
company get more response. For example, company want to issue 10,000 shares and company received application for 12,000 shares. That is called as a over subscription. मतलब अगर कम रिस्पॉन्स मिला तब उसे बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर ज्यादा रिस्पॉन्स मिला तो क्या बोला जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन. तो दोनों केस हो सकती है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है या ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है. If minimum subscription is not collected within the specified time, हम लोगों ने देखा minimum subscription should be collected. It means company should receive application equal to minimum subscription within 30 days from the date of issue of prospectus. अगर prospectus issue करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या करना है, the entire amount received as application money should be returned to the subscriber within 15 days of the closure of issue. म्हणजे ज्या ज्या लोकांनी अप्लिकेशन केलं, फॉर एक्झाम्पल मिनिमम सबस्क्रिप्शन इज गिवन 9,000 अँड कंपनी रिसिव्ड अप्लिकेशन ओनली फॉर 7,000 शेअर. फक्त 7,000 शेअर साठीच आपल्याला अप्लिकेशन आले, म्हणजे मिनिमम सबस्क्रिप्शन पूर्ण झालं का, नाही, कारण की ते किती होतं, 9,000. मग आपल्याला काय करावं लागणार, जे 7,000 लोकांनी आपल्याला पैसे दिलेले आहेत त्यांचं अप्लिकेशन मनी आपल्याला परत करावे लागणार. किती दिवसामध्ये, फ्रॉम विदिन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू. म्हणजे इश्यूची जी लास्ट डेट असेल ती डेट संपल्यानंतर 15 दिवसामध्ये ज्या ज्या लोकांनी अप्लिकेशन केले होते त्यांचे पैसे परत द्यावे लागतील. म्हणजे आपल्याला इश्यू काय करावा लागेल, कॅन्सल करावा लागेल. हा लक्षात. अगर 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना कहा है उतना रिस्पांस कंपनी को नहीं मिलता है तो कंपनी क्या करेगी, जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है उन लोगों ने कंपनी के एप्लीकेशन के साथ कंपनी को एप्लीकेशन मनी भी दिया है, वो एप्लीकेशन मनी कंपनी वापस करेगी. कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू. जिस तारीख को आपका इशू क्लोज होगा उस तारीख से 15 दिन के अंदर सभी एप्लीकेंट का पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा. टू अवॉइड सच सिचुएशन कंपनी में एंटर इनटू an underwriting agreement with the underwriters. So, if you want to avoid this situation, one option is available with company, that is underwriting of shares or underwriting of issue. म्हणजे जर तुम्हाला ही सिच्युएशन येऊ द्यायची नसेल, कारण की आपल्याला माहिती नसतं की आपल्या कंपनीचे जे शेअर्स आपण इश्यू करणार आहेत त्याला किती रिस्पॉन्स मिळणार आहे, हे आपल्याला माहिती नसतं. तो रिस्पॉन्स कमी पण मिळू शकतो, जास्त देखील मिळू शकतो. पण जर आपल्याला त्याची खात्री नसेल, गॅरंटी नसेल, तर एक ऑप्शन असतो तो म्हणजे अंडरराइटिंग. अभी अंडरराइटिंग में क्या किया जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल बैंक, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंक क्या लेगी, गारंटी लेगी आपके शेयर्स इशू करके देने की. तो मुझे अगर 10,000 शेयर इशू करने हैं तो मैं उस बैंक के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे अंडरराइटिंग करना है. कंपनी अपने बैंक अपने पूरे कंपनी का पोर्टफोलियो देखेगी और अपना अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके थ्रू कंपनी शेयर्स इशू करेगी. बराबर. अभी समझो हमारे शेयर्स के लिए सिर्फ 5,000 लोगों ने ही एप्लीकेशन किया, हमें बेचने थे 10,000, एप्लीकेशन आया सिर्फ 5,000 और मिनिमम सब्सक्रिप्शन दिया है 9,000, तो कम से कम 9,000 उतना रिस्पॉन्स आना चाहिए, पण आपल्याला तेवढा रिस्पॉन्स मिळाला नाही, उतना रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं. तो बैंक क्या करेगी, बचे हुए जो 4,000 शेयर्स है वो बैंक खरीद लेगी. बराबर है. तो यहाँ पे बैंक जिम्मेदारी लेती है सारे शेयर बेच के देने की, और अगर सारे शेयर्स वो बेच नहीं पाई तो जितने भी शेयर्स बचेंगे वो बैंक खुद खरीद लेती है. तो यहाँ पे कंपनी को सबस्क्रिप्शन का टेन्शन नहीं रहता. आलं लक्षात. म्हणजे अंडररायटिंग मध्ये बँक कंपनीचे शेअर्स विकून घेण्याची गॅरंटी घेते आणि जर ते शेअर्स विकले नाहीत, इश्यू केले नाहीत, तर कंपनी ते शेअर्स स्वतः विकत घेते. म्हणजे मिनिमम सबस्क्रिप्शनचं जे टेन्शन आहे ते कंपनीला राहत नाही. ऑफकोर्स बैंक चार्जेस कमीशन फॉर अंडरराइटिंग ऑफ इशू. सिंपल है. अगर बैंक इतना गारंटी लेती है
वो फोकट में काम करेगी क्या? नहीं, उसके लिए बैंक क्या लेने वाली है? आपसे कमीशन लेने वाली है। ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% as per SEBI's guideline and that should be collected within 30 days from the issue of prospectus. Fourth is closing of subscription list. As per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. Okay, so after getting application from applicant, company prepare subscription list and that subscription list must be open for minimum 3 days but not more than 10 days. म्हणजे ऍप्लिकेशन आल्यानंतर त्या सर्वांची एक लिस्ट बनवली जाते, त्याला म्हटलं जातं सबस्क्रिप्शन लिस्ट. आणि ती जी लिस्ट आहे ती लोकांना बघण्यासाठी कमीत कमी 3 दिवस ओपन ठेवावी लागते आणि जास्तीत जास्त 10 दिवसापर्यंत ती ओपन ठेवता येते. Applicant can apply for shares only when the subscription list is open. Okay, so applicant can apply for shares only if the subscription list is open. मतलब जब तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन है तब तक जो अप्लीकांट है वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. फिफ्थ, basis of allotment. Allotment of shares will be on the basis which will be decided for each category of subscriber. Allotment will be as per minimum application size as fixed by the company. तो कंपनी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट भी डिसाइड करती है. जैसे मैंने कहा कि आपको जो भी कंपनी को जो एप्लीकेशन आएंगे वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. समझो कंपनी को बेचने हैं 10,000 शेयर्स, 10 के 10,000 एप्लीकेशन आएंगे ऐसा नहीं, 10,000 से कम आ सकते हैं, थोड़े से कम आए तो चलेगा. मतलब समझो आ गए 9,800, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है सभी लोगों को शेयर्स मिलेंगे डायरेक्टली. लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो. ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अगर ज्यादा रिस्पॉन्स आया तो, मतलब 10,000 शेअर बेचणे है और एप्लीकेशन आया 12,000 शेअर्स के लिए, म्हणजे आपल्याला समजा ओव्हर सबस्क्रिप्शन झालं तर प्रॉब्लेम येतो. म्हणजे कसं 10,000 शेअर्स आपल्याला विकायचे आहेत आणि एप्लीकेशन आले आपल्याला 12,000 शेअर साठी. ॲट दॅट टाइम कंपनी डिसाइड बेसिस ऑफ अलोकेशन. म्हणजे त्यावेळी कंपनी एक अलोकेशनचं बेसिस डिसाइड करते की कमीत कमी किती एप्लीकेशन शेअर्स असतील तर त्याला शेअर्स द्यायचे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कंपनी डिसाइड करेल की कमीत कमी जर 10 शेअर साठी एप्लीकेशन केलं असेल त्याला शेअर द्यायचे. जर त्यांनी 10 पेक्षा कमी शेअर साठी एप्लीकेशन केलं असेल त्याला शेअर द्यायचे नाही. ओके, तो कंपनी कोई बेसिस डिसाइड करेगा. जे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कम से कम 10 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है तो उसको हम शेयर देंगे. अगर 10 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है तो उन लोगों को हम शेयर्स नहीं देंगे, उनका पैसा एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, किया जाएगा, वापस किया जाएगा. इस तरह से कुछ बेसिस कंपनी डिसाइड किया करती है. 6 is over subscription. Over subscription means when the application received for shares are more than the number of shares offered by the company. Okay, so when company get more response then there is a position of over subscription. म्हणजे कंपनीला जर जास्त रिस्पॉन्स आला तर त्याला म्हटलं जातं ओव्हर सबस्क्रिप्शन, कमी रिस्पॉन्स आला म्हटलं जातं अंडर सबस्क्रिप्शन. SEBI does not allow any allotment in excess of securities offered through offer document or prospectus. And अगर आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि हम 10,000 शेयर इशू करेंगे और आपको रिस्पॉन्स आया 12,000 के लिए, तो आप 12,000 शेयर इशू नहीं कर सकते. कितने के लिए आपने बोला है? 10,000. इट मीन्स यू हॅव टू इशू ओनली 10,000 शेअर्स. म्हणजे तुम्हाला फक्त जेवढे शेअर तुम्ही प्रॉस्पेक्टस मध्ये सांगितले तेवढे शेअर इशू करण्याची परमिशन असते. जरी तुम्हाला रिस्पॉन्स जास्त आला तुम्ही जास्त शेअर इशू करू शकत नाही. However, it may permit to allot not more than 10% of the net offer. हाँ, कभी कभी
आपको 10% ज्यादा शेयर इशू करने के लिए परमिशन दिया जा सकता है इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सेवेंथ इज परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एवरी कंपनी before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchanges to seek permission for listing of its shares with them. It means listing of share is necessary with any one or more recognized stock exchange located in India. म्हणजे जर कंपनीला पब्लिक इश्यू करायचं असेल तर त्या कंपनीला आपल्या शेअरची लिस्टिंग करावी लागते, म्हणजे रजिस्ट्रेशन करावे लागतं. आणि ती लिस्टिंग कोणत्याही एका किंवा एकापेक्षा जास्त रिकॉग्नाइज म्हणजे ज्याला गव्हर्नमेंटनी परमिशन दिलेली आहे असे स्टॉक एक्सचेंज जे भारतामध्ये आहेत त्यामध्ये त्यांना लिस्टिंग करणे कंपल्सरी आहे. ओके, तो शेयर्स इशू करने से पहले, अलॉटमेंट करने से पहले कंपनी को अपने जो शेयर्स है उनका लिस्टिंग करना पड़ता है किसी भी एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज मतलब अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज में. The prospectus shall mention the name of the stock exchange and the fact that an application for permission to list in that stock exchange has been made by the company. और जो भी prospectus कंपनी देती है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपके जो शेयर्स है वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किए हैं या लिस्टिंग करने के लिए आप लोगों ने वहां पे अप्लाई किया है. You have to mention the name of that stock exchange where your shares are going to be listed. आपके कंपनी के शेयर कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाले हैं उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपको वहां पे देना पडेगा. आलं लक्षात? म्हणजे तुम्ही कोणत्या स्टॉक एक्सचेंजला कंपनीचे शेअर लिस्टिंग करणार आहे त्या स्टॉक एक्सचेंजचं नाव तुम्हाला प्रॉस्पेक्टस मध्ये द्यावं लागतं. सी व्हॉट इज लिस्टिंग? Getting the name of the company included in the official list of securities that can be traded on stock exchange. लिस्टिंग म्हणजे काय? लिस्टिंग केल्यानंतर तुमच्या कंपनीचे शेअर त्या स्टॉक एक्सचेंज मध्ये काय केले जातात? ट्रेडेड केले जातात, म्हणजे सेलिंग अँड बाइंग करू शकतात. जर लिस्टिंग नसेल तर स्टॉक एक्सचेंजला तुमच्या कंपनीचे शेअर सेल आणि बाय करता येत नाही. ओके, लिस्टिंग मतलब हो क्या होता है? लिस्टिंग करने के बाद आपके कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल या बाय किए जा सकते हैं, मतलब परचेस किए जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं. अगर लिस्टिंग नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज पे आपके कंपनी के शेयर परचेस या बेचे नहीं जा सकते. 8.1 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इशू and various other agencies. Company has to appoint one or more merchant banker to act as a manager to the public issue. Company need to appoint one or more merchant banker who are going to act as a manager to the public issue of the shares. ओके, तो कंपनी को किसी भी एक या एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर को एज अ मैनेजर करके अपॉइंट करना पड़ेगा और वो मर्चेंट बैंकर उस पब्लिक इशू का जो भी प्रोसेस रहेगा उसके ऊपर ध्यान देगा. अभी मर्चेंट बैंकर क्या रहते हैं? वो बैंकर इशू करने के लिए कंपनी को मदद करते हैं. इट ऑल्सो हैज टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू. और कंपनी को और क्या अपॉइंट करना पड़ता है? रजिस्ट्रार टू द इशू. कलेक्टिंग बैंकर म्हणजे कोणत्या बँकेमध्ये आपले पैसे इन्व्हेस्टर जे पैसे देणार ते कोणत्या बँकेमध्ये जमा करायचे आहेत, बरोबर, त्याला म्हटलं जाईल कलेक्टिंग बँकर्स, ती अपॉइंट करावी लागेल. अंडर रायटर्स टू द इश्यूड, म्हणजे जर आपण अंडर रायटिंग, जसं मी आधी सांगितलं, अंडर रायटिंग म्हणजे काय? ती जी बँक असेल किंवा इन्स्टिट्यूशन असेल ते आपले शेअर विकून घेण्याची गॅरंटी घेते. जर ते आपल्याला करायचं असेल तर अंडर रायटर पण आपल्याला अपॉइंट करावे लागेल. ब्रोकर टू द इशू, self certified syndicate bank and advertising agent etc. all need to be appointed. Next is general principle. These are rules that a company must follow in addition to the provisions of the Company Act 2013. म्हणजे असे दुसरे काही रूल्स आहेत
म्हणजे कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये जे स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजन दिल्या त्या कंपनीला फॉलो कराव्याच लागतात. पण त्याचबरोबर इतर काही प्रोव्हिजन दिलेले आहेत, त्याला जनरल प्रिन्सिपल असं म्हटलेलं आहे, ते देखील कंपनीला फॉलो कराव्या लागतात. ओके. सो फर्स्ट इज गिवन प्रॉपर ऑथॉरिटी. The board of directors or the allotment committee set up by the board has the authority to allot shares. So allotment of shares can be done by the board of directors or the allotment committee set up or appointed by the board of directors. मतलब शेयर्स अलॉट करने का जो अधिकार रहेगा वो किसके पास रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रहेगा. या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, मतलब अप्लीकांट को शेयर्स दे सकते हैं, कितने शेयर्स देने हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, या अलॉटमेंट कमिटी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, ऐसी अलॉटमेंट कमिटी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकती है. आलं लक्षात? म्हणजे जे शेअर्स अलॉटमेंट आहे, अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स करण्याचा अधिकार कोणाकडे असणार आहे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कडे असणार आहे. किंवा अलॉटमेंट कमिटी म्हणजे जी कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरने अपॉइंट केलेली असेल अशी अलॉटमेंट कमिटी, ही कमिटी अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स करू शकते. सेकंड, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेन्स्ट अप्लिकेशन ओनली. अ कंपनी कॅन अलॉट शेअर्स ओनली इफ इट हॅज रिसीव्ह अ रिटन अप्लिकेशन फॉर शेअर्स फ्रॉम दी अप्लिकांट. म्हणजे ज्या लोकांनी अप्लिकेशन केलेलं आहे, रिटन अप्लिकेशन केलेलं आहे शेअरसाठी, त्यांनाच शेअर्स अलॉटमेंट केले जाऊ शकतात. ज्यांनी अप्लिकेशन केलेले नाही अशा लोकांना शेयर्स कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अलॉट करता कामा नहीं. ओके. तो जिन लोगों ने अप्लीकेशन किया है उन्हीं लोगों को, रिटन अप्लीकेशन, उन्हीं लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे. अगर किसी लोग पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लीकेशन नहीं किया है, ऐसे पर्सन को शेयर्स अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा. Third is reasonable time. As per the Act, allotment shall be done within 60 days of receipt of application money. Allotment can be made from the 5th day from the date of issue of prospectus. So, company need to complete the entire process of allotment of shares between 60 days of the receipt of application money. म्हणजे अप्लिकेशन मनी आल्यानंतर 60 दिवसामध्ये शेअरचं अलॉटमेंट करायला पाहिजे. हे अलॉटमेंट प्रॉस्पेक्टस इश्यू केल्यानंतर 5 दिवसानंतर देखील कंपनी चालू करू शकते. म्हणजे प्रॉस्पेक्टस इश्यू केलं, तुमच्याकडे अप्लिकेशन येत गेले, तुम्ही शेअरचं अलॉटमेंट करत गेले, 5 दिवसानंतर तुम्ही अलॉटमेंटची प्रोसेस चालू करू शकता. पण जास्तीत जास्त किती दिवसामध्ये कंप्लीट करावी लागेल? 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अप्लिकेशन मनी. मतलब अप्लीकेशन मनी आने के बाद 60 दिन के अंदर आपको शेयर्स का अलॉटमेंट करना पड़ेगा. या अगर आप लोगों ने प्रॉस्पेक्टस दिया है, मतलब वो देना ही पड़ेगा, और प्रॉस्पेक्टस देने के बाद 5 दिन के बाद आप अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो. फोर्थ, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट. Shares should be allotted on the same terms as stated in the prospectus and application form. No change in the term of allotment or new condition can be added at the time of allotment. So company don't have right to make changes in terms or rules and regulation or conditions given in prospectus while making allotment of shares. मतलब एक बार जो टर्म्स, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन प्रॉस्पेक्टस में दिए गए वो फाइनल माने जाएंगे. अलॉटमेंट के समय वो जो रूल्स है या जो भी कंडीशन है या टर्म्स है उसमें किसी भी तरह का चेंज करने का अधिकार कंपनी को नहीं रहेगा. म्हणजे एकदा प्रॉस्पेक्टस मध्ये ज्या टर्म्स सांगितल्या असतील, ज्या कंडिशन सांगितल्या असतील त्या फायनल समजल्या जातील. अलॉटमेंट करताना प्रॉस्पेक्टस मधल्या ज्या काही टर्म्स असतील, कंडिशन्स असतील, रूल्स असतील, रेग्युलेशन्स काय असेल त्याच्यामध्ये चेंज करण्याचा अधिकार कंपनीला नसेल. फिफ्थ इज कम्युनिकेशन. कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द अप्लिकंट दैट shares have been allotted to him by sending a letter of allotment
or allotment advice. So once shares are allotted to the applicant, then company need to send allotment letter or allotment advice to the applicant. म्हणजे एकदा शेअर्स तुम्ही अलॉट केले अप्लिकंटला, त्याला शेअर्स अलॉट केल्यानंतर त्याला ते सांगावं लागतं. मग ते सांगण्यासाठी कंपनी लेटर सेंड करते, त्याला म्हटलं जातं अलॉटमेंट लेटर किंवा अलॉटमेंट ऍडवाइसच्या थ्रू त्या अप्लिकंटला सांगावं लागतं की तुम्हाला किती शेअर्स अलॉट केलेले आहेत. ओके, तो शेयर्स अलॉट करने के बाद कंपनी जिस पर्सन को शेयर्स अलॉट किए हैं, मतलब अप्लीकांट को शेयर्स अलॉट किए हैं, उस अप्लीकांट को लेटर सेंड करेगी. उस लेटर को कहा जाएगा अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट एडवाइस. दिस लेटर गिव्स डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड एटसेट्रा. ओके, म्हणजे कंपनी अलॉटमेंट लेटर सेंड करणार, कारण की त्या अप्लिकंटला कळायला पाहिजे की त्याला शेअर्स मिळालेत का नाही मिळाले, आणि मिळाले तर किती मिळाले. मग कंपनी त्या अलॉटमेंट मध्ये लेटर मध्ये मेन्शन करते की तुम्हाला कंपनीने किती शेअर दिलेले आहेत आणि तुम्हाला आता अलॉटमेंट मनी किती भरायचा आहे. पहिलं अप्लिकंटनी काय भरलं होतं, अप्लिकेशन मनी. आता त्याला काय भरावं लागणार आहे, अलॉटमेंट मनी. आणि अलॉटमेंट मनी भरल्यानंतरच तो कंपनीचा शेअर होल्डर होतो. ओके, तो कंपनी उनको सेंड करेगी अलॉटमेंट लेटर, और अलॉटमेंट लेटर में कंपनी को लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि उस अप्लीकांट को उन्होंने कितने शेयर दिए हैं, और उनको ये भी मेंशन करना पड़ेगा अभी अप्लीकांट को कितना अलॉटमेंट मनी भरना है कंपनी के पास. मतलब क्योंकि अप्लीकांट ने पहले जो पैसा दिया उसे कहा जाएगा अप्लीकेशन मनी. अभी अप्लीकांट को क्या भरना पड़ेगा, अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी भरने के बाद ही वो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, उसके पहले नहीं. Sixth is, allotment should not be contravention, that is violation of any other law. मतलब जो भी अलॉटमेंट करना है वो करते समय जितने भी इंडिया में लॉ है कंपनी से रिलेटेड, उस लॉ किसी भी लॉ का वायोलेशन नहीं होना चाहिए. A company cannot allot shares by violating or contradicting any other existing law. Example, shares cannot be allotted to a minor. म्हणजे शेअर्स अलॉट करताना इतर जे काही रूल्स आहेत, लॉ आहेत, त्या लॉ कोणताही लॉ तुटता कामा नाही किंवा त्याचं उल्लंघन होता कामा नाही. व्हायोलेशन म्हणजे उल्लंघन होणे. फॉर एक्झाम्पल, शेअर्स कॅनॉट बी अलॉटेड टू अ मायनर. म्हणजे असा रूल आहे की जो मायनर असेल, म्हणजे ज्याचं एज 18 पेक्षा कमी असेल, त्याला मायनर म्हटलं जाईल, त्याला शेअर्स अलॉट करता येणार नाही. तो रूल देखील कंपनीला त्या ठिकाणी लक्षात घ्यावा लागेल. ओके, तो शेयर्स का अलोकेशन करते समय, अलॉटमेंट करते समय दूसरे जो लॉ है उनको भी कंसीडर करना पड़ता है, और ये देखना पड़ेगा कि हमारे अलॉटमेंट में किसी भी लॉ को हम ब्रीच नहीं कर रहे, वायलेट नहीं कर रहे, वायलेशन नहीं कर रहे, उसका वो हमें देखना पड़ेगा. If company allot shares after fulfilling all the above mentioned requirements or provision, such an allotment is called as regular allotment. But if even one provision is not satisfied, then it is called as irregular allotment, and such allotment is invalid. So if company follows all provision and make allotment, then that allotment called as a regular allotment. म्हणजे कंपनीने समजा सर्व प्रोव्हिजन फॉलो केल्या, सर्व रूल्स फॉलो केल्या आणि अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स केलं, म्हणजे कोणत्याही जे रूल्स आहेत त्याचं उल्लंघन केलं नाही, कोणताही रूल तोडला नाही, मग त्याला म्हटलं जाईल रेग्युलर अलॉटमेंट. आणि समजा त्यांनी कोणत्या तरी रूल ब्रीच केला, कोणता तरी रूल तोडला, त्या प्रोव्हिजन फॉलो केली नाही, एक जरी प्रोव्हिजन फॉलो केली नाही, तर त्या अलॉटमेंटला म्हटलं जाईल इरेग्युलर अलॉटमेंट, आणि तुमचं जे अलॉटमेंट आहे ते कसं समजलं जाईल, इनवैलिड समझला जाए. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, अगर कंपनी सारे के सारे प्रोविजन फॉलो करती है, सारे के सारे रूल्स फॉलो करके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है, तब उस अलॉटमेंट को कहा जाएगा रेगुलर अलॉटमेंट. लेकिन अगर एक भी प्रोविजन, इतने सारी प्रोविजन है उसमें से अगर एक भी प्रोविजन कंपनी ने फॉलो नहीं किया, या किसी जो रूल्स है या लॉ है उसको ब्रीच किया, उसको तोड़ दिया,
उसको फॉलो नहीं किया, तो उस अलॉटमेंट को कहा जाएगा इरेगुलर अलॉटमेंट, और उस तरह का जो इरेगुलर अलॉटमेंट रहेगा वो इनवैलिड माना जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट allotment of shares and provisions related to allotment of shares.